होप यू ऑल आर वेल। मेरे इस नए वीडियो में मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं जो सभी ऑडियंस के लिए जानना जरूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल शॉक्स है। जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है उसके बारे में मैं डिटेल एक एक करके पॉइंट बताऊंगा। जब बॉडी रेसिस्टेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। जब बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है नॉर्मली 1000 ओम से लेके 1 लाख ओम होता है। The body resistance is also depend upon the wet and dry. Body गीला है और सूखा है. If the body resistance is 10,000 ohms in the dry condition and in wet condition, the resistance of the body is less than 1,000 ohm. So the second is basically voltage. Voltage basically are the low voltage, medium voltage or high voltage. That also depend upon the touch voltage and the step voltage. चलिए एक एक समझते हैं इसको हम। The circuit voltage होता है that is one of the extra low voltage which is basically safe, जो हम लोग बोलते हैं 50 volt AC और 120 volt DC, and it is also basically depend upon the resistance R. So in below 1000 ohm of 5 volt can get also a shock. The low voltage की बात करेंगे that is also basically electrical shock are purely the range in this voltage, the 50 volt to the 1000 volt which gets the electrical shocks. The high voltage basically is more than 1000 ohm which gets the electrical arcing. यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इस पिक्चर में तो देखिए ईयर टू ईयर रेसिस्टेंस 100 ओम्स आता है। अगर मैं ड्राई कंडीशन की बात करूंगा तो बॉडी का ड्राई कंडीशन में रेसिस्टेंस 1 लाख ओम हो जाता है। वेट स्किन में अगर बात करूंगा तो 1000 ओम आता है। सो हैंड टू फुट अगर बात करूंगा तो 500 ओम्स आता है। दीज आर द बेसिकली द डिपेंडिंग अपॉन दिस द बॉडी रेसिस्टेंस एंड द वोल्टेज। अगर मैं इसमें टच वोल्टेज और स्टेप वोल्टेज की बात करूंगा जो दिस इज पोल बेसिकली, अगर एक वायर यहाँ पे टूट गई है और इस बॉडी से वायर अगर टच हो जाता है, सो दिस बेसिकली द टच ऑफ दिस पॉइंट एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड जहाँ पे उसकी लेग है, दिस इज टच वोल्टेज। इन अदर वे दैट इज स्टेप वोल्टेज। द पर्सन आर नॉट टचिंग दिस द पोल बट देयर इज अ डिफरेंस इन द लेग having the different potential. So difference in the potential, the lower this leg having the higher voltage and the longer the leg from the pole having the lower potential. So the higher potential minus lower potential is nothing but a step voltage. So the next is amount of the current. Amount of the current is also very much depend upon this electrical shocks. So amount of the current is measured 30 milliampere, 100 milliampere or 300 milliampere. That is 0.03 ampere, 0.1 ampere or 0.3 ampere. So the circuit the current value are generally considered as a safer limit. कौन सा करंट किस टाइम तक सेफर होता है इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 30 मिली एम्पियर फॉर द टाइम ऑफ द लेस देन 1 सेकंड, 300 मिली एम्पियर फॉर द टाइम ऑफ द 50 मिली सेकंड्स and the 500 milliampere for the time of the less than 30 milliseconds. The next some few parameters. Also the remember the 1 ampere is basically 1000 milliampere. The some few parameters also basically the need to be focused for the electrical shock. The path of the current, the किस path से current को flow किया जाए, flow हो रहा है finger to finger, hand to hand और hand to foot. Next is the area of the context, body के किस part से area की context हो रही है, that also basically depend each area of the body having the different potentials, different resistance, hence the shocks are also depend upon this the area of the context. अगर हम ये बात करेंगे एक आदमी अगर पोल को टच किया है, they are standing on the ground, so the current basically flow from here to here. So current is basically flow in the all direction, but the larger of the current will flow from those area where the resistance value is very less. The duration of the context is very important. The body के किस part में कितने टाइम तक करंट रहती है, that is in the milliseconds, the fraction of the seconds, 1 second or more. Next, the frequency. The low frequency of the AC is more dangerous than the higher frequency of the AC. The detail basically theory will explain the next time of the video. That is theory of the skin effect. The overall health of the person is also parallelly depend. Person are healthy or the sick also depend upon the age of the human. So this here in the picture, the sick person and the healthy person or the baby are also having the different kind of the shock they can get. So the overall of the result in this entire video is the electrical shock which depend upon this. The sum of this all the parameters will give the result of the electrical shock. So
The leakage of the next slide, the leakage of the electrical current also depend upon the human body, in which body having the effect of the how much current. The 1 ampere to 10 milliampere, the pinkling start sensation, and up to the 500 milliampere, that is 0.5 milliampere, is cardiac arrest, will immediately lead to the death. So this also need to know by this audience. The next topic is very also important to all of the audience, which is the more dangerous, the current, voltage, or both, with the detail in the theory and the practicals. Thanks to all. Have a great day. Thanks to all. Thank you.